Hello everyone in the Ansakari again, and today we are going to look out about the directive principles of state policy. Um, like we talked about the fundamental rights, which lies in the part third. So directive principles lies in part four of the Indian Constitution. If in brief, if we want to give the introduction of directive principles, so as the name is suggesting, they are the directives or the directions which is given to the state, which includes executive government, legislature, parliament, PSUs, local institutions, and all the part of state, and these are the directions to all the stakeholders of the state. जब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की, so that is also defining the state, which includes number of stakeholders. On the similar pattern, article 36, from where the fundamental right starts, we have the definition of state also in article 36, which says that parliament, state legislatures, government, both of union and state, judiciary, both of central level, state level, district level, government organizations, PSUs, any body which is getting aid, substantial recognition from the state, all are the part of state. Hence, Article 12 in the part 3rd and Article 36 in part 4, both are defining state. So in part 12 or the article 12 is giving rights to the people in context with the state definition, but article 36 is giving direction to the state and its stakeholders in the context of people's welfare. And that is why on the basis of this pretext, the fundamental rights are considered as the rights for the political democracy, and the directive principles are considered as the directions to the government, but some sort of rights to the people in the form of social and economic democracy. When we will study about the relationship between fundamental rights and directive principles, so the main crux of this relationship is that fundamental rights are coterminous with the directive principles, which signifies that political democracy, which is getting enshrined from the fundamental rights, can exist only when you have on the ground the social and economic democracy, which comes via the directive principles. So directive principles, uh, Article 36 to 51 we have in part 4. They are derived from the Irish Constitution, Ireland Constitution by Dr. B.R. Ambedkar. And from there, we took this idea of directives, which are the directions given to the state or to the government agencies so that the social economic democracy can establish on the grassroots. And that is the reason on the basis of which the Supreme Court also mentions that the constitutional morality is not just coming from the fundamental rights. The constitutional morality is primarily coming from the directive principles when the government, as the major stakeholder of the society, is implementing the social and economic democracy at the base, and over which the rights are entertained by the people in the form of fundamental rights. So, niche social and economic democracy, and upper political democracy. So uh, both have to run co-harmoniously, and that is what in the various verdicts which we'll be looking later on, the Supreme Court has opined. So fundamental rights uh, prevents the government to commit some act which can curtail the fundamental rights, but directive principles provides the directions and provides the support to the government that you should take some sort of lead and you should try to implement some direction so that the harmony can exist in society, the rule of law can come in the society, and the society runs on the principles of liberalism, equality, justice, fraternity, and so on and so forth. Now, these are the famous personalities of the Indian Constitution who have given their comments, so we can look them. DPSPs has been considered as a moral precepts and an educative value for the Indian polity. B.N. Rao, he was the constitutional advisor of the Indian Constituent Assembly. Then Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar, he called this chapter as an instrument of instructions, and the fundamental rights is considered as an instrument of rights or charter of rights, and DPSP are considered as instruments of instruction by Dr. B.R. Ambedkar. Then Greenville Austin, he is a famous uh, British political scientist who studied Indian constitution and upholded the viability
of the constituent makers' achievement, what they have drawn such a beautiful constitution in such a vast democracy like India. So he says that DPSP and fundamental rights both are the consigns of the Indian Constitution. If you take one and left another, the Constitution will not work properly. And Supreme Court has said that directive principles are the forerunners of the UN Convention on Right to Development. Kushi, can you please stop this? Uh, the Supreme Court has said that the directive principles are the forerunners of the UN Convention on Right to Development. If we talk about like what are the philosophy behind directive principles, so there are a number of factors in this philosophy. Number one, they provide a comprehensive picture of economy, social, and political program in Indian democracy. Number two, they ensure that justice, liberty, equality, fraternity, which are the principles enshrined in the preamble, they actualize on the ground. Number three, they maintain that India remains always a welfare state, not an executive state, not a police state, not a colonial state. And in the last, the fourth point, they ensures that before political democracy, India should exercise and India should enjoy the beauty of economic and social democracy. I would like to give the comment of Dr. B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly when he said, quote, that before the political democracy come in India, unless and until we have the social and economic democracy at the base, we cannot ensure that India remains a rule of law country, and the constitutional morality cannot come unless and until you have the social economic democracy at the grassroots and court. Then Article 36, it says that what is the definition of state? So we have legislative organs like parliament, state legislative assembly, councils. Then we have the executive organs like the union government, ministries, state government departments. Then the local authorities like panchayats, municipalities. Then the government organizations, statutory bodies, regulatory bodies, RBI, Quality Council of India, everything which is having some sort of association with the government tag, that is a part of state under the Article 36. Then Article 37, it says that directive principles are not justiciable in the court of law and also they are not enforceable. Now, what is the difference between justiciable word and enforceable? Justiciable simply means that in case your directive principles are curtailed and abrogated by any executive or the legislative government, you can reach out to the court. This process means that it is justiciable. You have the path of justice through which you can achieve the gates of the court and you can say that my rights, my X and Y, Z rights have been curtailed out. This is the meaning of justiciable. Now, the meaning of enforceable is that not only the court is entertaining your appeal, but also it is enforcing on that. It is saying, it is giving mandamus writ, it is giving prohibition writ, it is giving certiorari writ to the court, to the quasi-judicial bodies, to the government, that you please either take action or you not take action or you prove the warrant of your office or your designation. So this is Article 37 of the DPSP saying, and along with that, it is also saying that why, what are the reasons that they cannot be enforceable, justiciable? It's only because of the logistic, because of the financial, because of the economic potential, which is not has been reaped as far as the India's rising stage is concerned. A time will come in the Constituent Assembly itself. It was said and opined by Dr. B.R. Ambedkar that one day the time will come, then when we'll be able to have the directive principles also enforceable and justiciable, but provided the current circumstances, we can't afford that. The reason being, we are the novice democracy and we have to ensure that the political democracy, socio-economic democracy runs co-harmoniously, but with the horizontal and the vertical, we can say, uh, horizontal and vertical arrangements. Everywhere you cannot say that my directive principles, I have to enforce it, I have to justify it. So that is the crux of Article 37. And Article 37, number third thing which it says,
It says that these principles are the fundamental principles in the governance of the country. It shall be, it is not will, the word is shall. It shall be the duty of the state to apply in making laws. यानी स्टेट की एक जिम्मेदारी है कि जब भी वो कोई कानून बनाए, कोई पॉलिसी बनाए, कोई गवर्नमेंट स्कीम लाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की एक दो या जितनी भी वैल्यूज है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. So this is Article 37 saying. And now why the directive principles, और अगर हम बात करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन में ऐसे कौन से दो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की अंडर आर्टिकल 36 और 12 यानी स्टेट में जिनको हम मानते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सपोर्ट की किसे की कौन करता है और फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट कौन करता है. सो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट is always known for upholding the rights to the large. And in the Indian constitutional context, the Parliament of India is known for its support for the directive principles. The reason being, it is not that the government wants to exercise the executive arbitrariness. It is only because the directive principles are considered as larger than the fundamental rights when we talk about the implementation of the government schemes are concerned. Why? What is the reason behind? Because fundamental rights are individualistic in nature primarily, and directive principles are collective primarily. जब पार्लियामेंट बैठती है तो फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर किया जाता है, लेकिन बात की जाती है सोसाइटी का कलेक्टिव विजडम किस तरीके से अपहोल्ड किया जाए. आप किसी होटल के अंदर, आप होटल की मैनेजमेंट, आपका प्राइवेट होटल, आप उसे चलाइए, दैट इज अ फंडामेंटल राइट. लेकिन जो पूरी सोसाइटी के अंदर जो फंक्शनिंग है, ताकि सोसाइटी के अंदर किसी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही बता रहे हैं. तो इसीलिए जब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, जब हम बात करते हैं 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, जब हम बात करते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd, 44th, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, सबके बीच में अगर जुडिशरी एक हैंड पे और पार्लियामेंट दूसरे हैंड पे खड़ी हुई है, तो इन दोनों चीजों को लेकर के ही हुई है कि पार्लियामेंट ने हमेशा कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ज्यादा जरूरी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप अपनाइए, लेकिन फंडामेंटल राइट भी उतने जरूरी है. तो इसीलिए जब हम बात करते हैं आर्टिकल 31 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 39 बी एंड सी, तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जिनको फंडामेंटल राइट से ऊपर ही माना जाता है. यानी आर्टिकल 39 बी एंड सी आर मच ब्रॉडर, मच अपर एंड हैविंग मच स्ट्रेंथ एज फार एज द फंडामेंटल राइट्स आर कंसर्न्ड 14, 19 एंड 20. यानी आप अपनी इक्वालिटी, अपनी लिबर्टी, अपने राइट टू लाइफ के बिहाफ पे ये नहीं कह सकते कि हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ावा देंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को ढंग से नहीं चलने देंगे. सो इन 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 पार्लियामेंट ने ये डिक्लेयर किया कि 39 बी और सी ये हमेशा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही रहेगा. So this was some out of the box knowledge and the information. Now we are looking at the written things. So fundamental rights, they are negative. Why? Because again, they are prohibiting state from doing certain things. But yes, it promotes the positive liberty also when we talk about the liberty as a concept. Then directive principles are positive because ये बोलते हैं स्टेट को कि आप कुछ करिए. एनजीटी के एक्ट की अगर हम बात करें 2010 में, सो दैट वाज अ डायरेक्टिव. जब हम बात करते हैं कि सोसाइटी के अंदर दिवाली के ऊपर, फेस्टिवल्स के ऊपर, शादियों के ऊपर आप वेस्ट मैनेजमेंट करिए, आप क्रैकर्स को बर्न मत करिए, वो भी एक डायरेक्टिव है. These are justiciable and legally enforceable. As we know, the fundamental rights under Article 32 to 226, you can either go to the High Court or the Supreme Court, and this right is not available as far as the directive principles are concerned. Fundamental rights political democracy को uphold करते हैं, ये economic और social democracy. They have legal sanction, but directive principles do not have moral and political sanction, provided the government or the parliament has not made a law on it. In case the parliament has made a law on the directive principles, it becomes legally sanctioned. Then they promote the welfare of the individual and personal and individualistic.
But again, I would like to highlight here that under Article 21, which is considered as a derived right, Article 21 do not talks only about the personal or the individualistic right. That talks about the animal rights also. That talks about the rights of wildlife, flora, fauna also. That talks about the right of society also. That talks about the right of constitutional upbringing also. So fundamental rights are not only personal, they are social also. But directive principles are primarily social, societarian, and for the welfare of the whole community. Fundamental rights do not require any legislation for their implementation. They are automatically enforced. As I just mentioned in the second point, that if a law is made on the directive principles, then they are legally enforceable, they are justiciable, they are enforceable also. And the court is bound to declare a law violative of any of the fundamental rights as null and void, but the court cannot declare a law violative of any of the directive principles. But again, this is uh, this is not with the exception that in point number 7, Article 39 B and C, if it will be upholded, fundamental rights will be nullified. Article 14, 19, 21, you can't entertain that. And then we have the reasonable restrictions and the emergency chapters also, where the fundamental rights also in itself gets nullified for a limited time of period as far as the president declaration and the president order is concerned. We can move forward, Ashok. So what is Sapru report? It has specified us that fundamental rights are justiciable and DPSP are non-justiciable. But before that, we can say that Constitution in itself is providing such kind of definitions and the examinations that directive principles are not justiciable. And 36 to 51, it contained 20 DPSP, and as I mentioned that it was taken from Irish Constitution, and Irish ने लिया था Spanish Constitution से, so it is already a derived. They took from Spain and we took from Irish. Now, what are the goals, non-justiciable right and policies? So I would like to go on exact articles rather than just talking about these things in way. We'll be having the articles. Yes, below that. क्लासिफिकेशन बता दो एक बार. Okay. So we have various versions of the Indian Constitution, as we know. Various authors we have of the Indian Constitution. So in the Indian Constitution, there was no classification. It is mentioned that Article 36, 7, 8, 39, 40 until 51. But the authors and the political scientists who studied the Indian Constitution in detailed version, they classified that Indian Constitution Directive Principle chapter can be classified into 3 categories: socialistic, Gandhian, and liberal. Gandhian is coming from the forefather of our nation, Gandhi, socialistic from Pandit Jawaharlal Nehru, and liberalistic values from Dr. B.R. Ambedkar. Now, if this categorization becomes very important, so let me just speak out in the categorization form itself rather than going one by one. In the socialistic principles, we ensure in the preamble, in the fundamental rights, that India will achieve socialistic state. What kind of socialistic? Democratic. What kind of democratic? Mixed form of economy. So democratic socialism that is giving the way for the mixed economy, for the private, for the public sector to cooperate each other and to work where each can work harmoniously. So the very first article in the socialist category, we have Article 38. Article 38 says that to promote the welfare of the people, we have to minimize inequalities in 4 things. Number 1, income. Number 2, status. Number 3, facilities. And number 4, opportunities. यानी जब आप बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की आर्टिकल 38 में, तो ये बात करता है 4 चीजों को आपको खत्म करना होगा. पहला, इनकम इनइक्वालिटी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन अगेन दैट इज नॉट फीजिबल. एज पर द मेरिट द इनकम इज डिसाइडेड टुडे. Status, as per your hard work, as per your achievement, your status is defined today. Facilities, how much you can afford, you can buy that facility. If you can't afford, you can't buy that facility. Opportunities, equal opportunities from the state side. In private,
if anyone is not giving the similar kind of opportunities to 2 or 3 persons equally, that is not the part of directive principles. But Article 38 is saying these things. Now, important note here is, though the Constitution is providing these rights, and we know that they are not practical, but were the constituent makers were not aware of this fact? So the answer is yes, they were aware of this fact, but always the Indian Constitution has reflected the moral stand, the ethical stand, and the idealistic stand, and that is why when we talk about Gandhi, हम बात करते हैं राम राज्य की, that is a highest form of ideal state. So directive principles भी highest form of ideal state की बात करते हैं, और इसी वजह से इनके सारे आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और ना ही ये इन फुल इफेक्टिव मैनर कभी हो भी सकते हैं. Everyone I'm talking about, though some are the exceptions. Now Article 39. प्रवेश, Article 30, yes. पहले वाले में लिखा हुआ स्टेट शैल सिक्योर, स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर. इसका मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयरिज्म, टारगेटेड बेनिफिशियरी ऑफ सोशल स्कीम, सब इसके अंदर आ जाए. द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ये आर्टिकल बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यू. I believe so that positive discrimination is not the part of this, because that is the part that is under the fundamental rights category, when because clearly we have Article 16 and sub clauses where the positive discrimination in the form of reservation quota have been enshrined. So in directive principles, in Article 38 particularly, there is no such mention of that. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन से रिलेटेड तो नहीं हो सकता ना. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कैन बी with regarding to the economic discrimination, positively economic discrimination. For example, targeted beneficiary of the schemes. आप एक टारगेटेड को दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो, वो भी तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया. उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ. And That states could shall strive to minimize the inequality in income, DBT, eliminate inequality in status, facility, opportunity among the individual, among the groups residing in different areas and different location. ये ओवरऑल आर्टिकल 38. ठीक. yes. Okay. So Article 39 and then 39A. So Article 39, sub clause A, which is talking about right to adequate means of livelihood for all citizens. यानी स्टेट को ये इंश्योर करना है कि जितने भी सिटीजन हैं वो अपना गुजर बसर कर सके, राइट टू लिवलीहुड उनको हो, जितनी भी उनकी मेरिट है, जितनी भी उनकी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से उन्हें नौकरियां मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. और स्टेट ये इंश्योर करेगा. जब हम बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ही नौकरियां क्यों निकालें, तो हम बात कर सकते हैं आर्टिकल 39 के सब क्लोज 1 में भी लिखा गया है कि राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड, यानी ये सरकार का भी अधिकार है, दायित्व है कि वो अपने नागरिकों को उनकी जो जीवन शैली है उसके अंदर भुखमरी ना आए, उसके अंदर सबका लिवलीहुड बना रहे, उसका पूरा प्रावधान करे, जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है. क्लोज बी, it says the equitable distribution of material resources of the community for the common good. Now this is simply means that we have parks, we have street lights, we have highways, we have roads, we have government dispensaries. Everything is open to everyone. They are considered as the common good. आप पार्क के नीचे जाकर किताब खोल के पढ़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता है. आप किसी भी सड़क पर अपनी गाड़ी चलाई, प्रोवाइडेड देयर आर नॉट ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल्स, आपको कोई नहीं रोक सकता है. सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, यानी जो टेंजिबल फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज है, वहां पर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और कॉमन गुड को सभी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं सबको बराबरी की हिस्सेदारी होगी. क्लोज सी, इट सेज कि वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कंसंट्रेशन को रोकिए, ये स्टेट का दायित्व है, यानी प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. अब ये हाईली आइडियलिस्टिक चीज है कि आप कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकिए. जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उतना कमाता है, लेकिन स्टेट जो है, अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती, यानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती कि आप लिमिट लगा दीजिए कि आप जितना मर्जी काम कीजिए, आप इतने ही कमा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कमा सकते आप. लेकिन यहां पर भी जब हम बात करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी की, या फिर हम बात करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी की, तो हमारे यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स भी है.
जिसके तहत इस आर्टिकल को और इस आर्टिकल के सब क्लोज को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जाता है। जब आप बात करते हैं कि जो बीपीएल फैमिलीज है उनको टैक्स से एग्जेम्पशंस हैं, जो उससे ऊपर है उनको इनडायरेक्ट देना पड़ता है, और डायरेक्ट में रिबेट और सब्सिडीज का मैकेनिज्म है, और उससे ऊपर जो हाई क्लास इंडिविजुअल्स हैं जिनकी वेल्थ काफी होती है उनके ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्स भी लगता है। तो ऑलरेडी इनडायरेक्ट फॉर्म में डायरेक्टिव प्रिंसिपल वहां पर इंप्लीमेंट होता है। देन सब क्लोज डी, इट सेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। यानी अगर आप किसी भी एमएनसी के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप काम कीजिए, आपका जो काम है आपके डेजिग्नेशन के सिमिलर जो डेजिग्नेशन है उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपको मिलेगा। जितना काम आपने किया उतना ही उसने किया, तो दोनों को बराबर की सैलरी मिलेगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है आर्टिकल 39 क्लोज डी, एंड दैट इज व्हाई आर्टिकल 39 सी डी, they are upper than the fundamental rights article 14, 19 and 21। एक में आप बात करते हैं इनकम इनइक्वालिटी। They are हाँ बोलिए। above the Article 4 fundamental right. No, 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 no. Article 14, 19, 21 will also be under the jurisdiction and beneath Article 39 clause C and D. It is equally clearly mentioned. Then E, the second last, it says preserve the health and strength of workers and children against the forcible abuse। तो जब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ चिल्ड्रन की, वो इसको इंश्योर करता है। जब हम बात करते हैं माइंस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, चिल्ड्रन वर्किंग फैक्ट्री एक्ट, ये सारे उसकी बात करते हैं। उसके अंदर हम बात करते हैं कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, तो फायर सेफ्टी रूल्स की हम बात करते हैं। चिल्ड्रन का टाइम पीरियड हम बात करते हैं, क्रैच फैसिलिटी की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स हैं वो इंश्योर हो, जो वहां पर टॉयलेटरीज है और सब चीजें। तो इस तरीके से yes, so Article 39 clause E says this, and the last sub clause of Article 39 is clause F. It says opportunities for the healthy development of children. Now, healthy development is not only about health, it is also about education, because it is talking about the capacity development. And capacity development includes your basic amenities, your education, your health, your cognitive development, and everything. So, hence, Article 39 in itself is providing the gender equality, the economic equality, and more importantly, the child rights. So, Article 39C, D, again, I'm saying they are above the fundamental rights. So, now we can move यार on Article ये 30. Yes. स्पेसिफिकली आप बता दो, मतलब कहाँ पे दिया हुआ है, कहीं पर एग्जैक्टली अबव द फंडामेंटल राइट ऐसा? When we study Oshik 25th Constitutional Amendment Act 1971, right? So, in this act, I think you were absent in that day. In this act, two provisions Parliament of India mentioned. Number one, Article 39 C and D will be above of Article 14, Article 19, and Article 21. Second clause they mentioned that in case Article 39 sub clause C and D is implemented by the Parliament, so in the course of that time and later on also, not even a single court will be able to exercise judicial review power of that. Then finally came Keswanand Bharti case. So Keswanand Bharti case is not about Medanur Math, it is about whole India. In that case also it is mentioned that 25th Constitutional Amendment Act 1971 का पहला प्रोविजन जो कि कह रहा है कि आर्टिकल 39 सी एंड डी को इंप्लीमेंट करोगे तो फंडामेंटल राइट्स को नल कर दिया जाएगा। लेकिन जब दूसरा वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर भी ले ली जाएगी, वो गलत है। यानी आप 39 सी एंड डी को इंप्लीमेंट करिए, फंडामेंटल दबाइए, जुडिशल, हाँ true। लेकिन जुडिशियल रिव्यू पावर हमारी रहने दीजिए, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसलिए आर्टिकल 31, अब मैं बता देता हूँ लिखा कहां पर है एग्जैक्टली। आर्टिकल 31 ए बी सी, जब आप बात करते हैं पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300 ए, वहां पर सब एक्सेप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 31 ए बी सी के। तो 31 बी के अंदर ये एग्जैक्टली मेंशन है, 31 ए के अंदर 9 शेड्यूल के मैटर है,
31C के अंदर अदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल और 39B के अंदर ये एग्जैक्टली मेंशन है कि 39BC को इम्प्लीमेंट करोगे तो वो मैटर उठा करके 9 शेड्यूल में डाला जाएगा और आर्टिकल 14, 19, 21 नल हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद बोला गया क्या कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू तो कर ही सकती है। ठीक, थैंक यू। So now Article 39A. Now Article 39A was added on later in the Indian Constitution. Now by what and which Constitutional Amendment Act? So we have 42nd Constitutional Amendment Act 1976. And here the government was of Morarji Desai. प्रवेश इंदिरा गांधी हो गए ना? Indira Gandhi. 78 में आया था। Yes. Why the 42nd Constitutional Amendment Act is known majorly in India? It's because it is considered as the mini constitution of India because it abrogated most of the things in every part of the Indian constitution. We'll be talking them in detail. So Article 39A, which was headed by 42nd Amendment Act 1976 by the Indira Gandhi government, it says that equal justice and free legal aid to the poor should be ensured. So the article is just this much: equal justice and free legal aid. But on the basis of that, what we have in the Indian Constitution is the system of ADR, Alternative Dispute Resolution Mechanism. What is it all about? It says that you will be having the sub judiciary. What kind of that? It will be NALSA, SALSA, DALSA. At the national level, you have National Legal Service Authority, state पे state legal service authority, district पर district legal service authority, and obviously as I mentioned that the directive principles becomes legal, justified, enforceable provided the parliament make a law on that. And finally in the later course of the years on Article 39A a law was also made that provided the NALSA statutory status. It was earlier the executive body, later on it became the statutory body. 1987. Yes. So it says कि कोई भी गरीब व्यक्ति, वंचित व्यक्ति, destitute woman, orphan, transgender, acid attack victim, road rage victim, trial victim, police custodial death victim, every individual associated with such kind of problem can visit the DALSA, SALSA, NALSA on the respective places. Then in the socialistic category itself, when we are working on, Article 41 comes because Article 40 is a part of Gandhian principle. We'll be looking at the categorization way itself. Article 41, it says that government will ensure right to work, education, public assistance in 4 things. Number 1, unemployment. Number 2, old age. Number 3, sickness. And number 4, disablement. यानी अगर ये 4 कंडीशंस को आप मीट करते हैं तो आपको राइट टू वर्क भी दिया जाएगा, एजुकेशन भी दिया जाएगा, पब्लिक असिस्टेंस भी दी जाएगी अंडर आर्टिकल 41। कैसे दी जाती है? अनएम्प्लॉयमेंट आपको मनरेगा है, आप काम कीजिए। ओल्ड एज के अंदर आपको पब्लिक असिस्टेंस दी जाती है जिसमें कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत आपको 3000 मासिक पेंशन मिलती है हर मंथ। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री इलाज मिलता है। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे कि बसेस, रेलवेज, आपको सब्सिडाइज्ड फॉर्म ऑफ टिकट्स मिलते हैं, आपका पास बनता है। इसके बाद आपको ओल्ड एज के तहत आपको टैक्स के अंदर जब हम देखते हैं 2023 बजट, आपको इनकम टैक्स रिबेट में भी छूट मिलती है। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ दैट। नाउ सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, सो वी हैव ALMCO, which is a PSU, ALMCO, which is a PSU, which provides timely disabled instruments and the equipments to the disabled on the basis of the data which is collected by the panchayats, municipalities, which reaches to the high levels. So this is Article 41 is all about. Then Article 42, again in the socialistic category, it says that humane conditions होनी चाहिए काम की और maternity relief। जब हम बात करते हैं क्रैच फैसिलिटी की ऑफिस में,
जब हम बात करते हैं कि 3 महीने की छुट्टी जो है प्राइवेट में मिलनी चाहिए और 2 साल की गवर्नमेंट सर्विसेज में मिलनी चाहिए, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, आप हाइजेनिक, अगर आप लेडीज और जेंट्स दोनों आपके यहाँ काम करते हैं तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि दोनों के टॉयलेट्स अलग हो, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। हाइजेनिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। उसके बाद जो आपका एक्सेसिबिलिटी है, जैसे कि हम लिफ्ट की बात करते हैं, अगर डिसेबल भी आपके यहाँ काम करते हैं तो उनके लिए भी लिफ्ट की फैसिलिटीज हो, व्हील चेयर की फैसिलिटीज हो, तो ऑल आर द पार्ट ऑफ आर्टिकल 42। देन आर्टिकल 43, यहाँ पर स्टेट कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक अच्छा वेज यानी एक अच्छी तनख्वाह, एक डिसेंट स्टैंडर्ड दूं लोगों को, और सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज दूं सभी वर्कर्स को। जब हम बात करते हैं वेजेस एक्ट की, जब हम बात करते हैं कोडिफिकेशन ऑफ ऑल लेबर लॉज इनटू 4 कैटेगरीज, तो दे आर इंश्योरिंग दिस आर्टिकल 43। rationalization of the labor laws, rationalization of the working conditions, timely conditions। आप ESIC, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत, जो आपको 25,000 से कम कमाने वाला इंसान है, जिसकी सैलरी को सैलरी नहीं माना जाता, उसको वेज ही माना जाता है, उसको आप ESIC का प्रावधान दीजिए ताकि वो हेल्थ अपना इंश्योरेंस करा सके, उसकी फैमिली में कोई भी दिक्कत आए तो वो वहां पर जाके अपना इलाज करा सके, मैटरनिटी कंडीशंस में, डिसेबल कंडीशंस में। इसके बाद और सोशल एंड कल्चर, हाँ बोलिए उसे। और मिनिमम वेज एक्ट 1948 जो कल डिस्कस किए थे एथिक्स केस स्टडी में, तो वो इसी आर्टिकल से डिराइव होता है। ओवर 43, आर्टिकल 43 डीपीएसपी के अंदर में। यस, एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, यानी आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी कास्ट के हैं, आप किसी भी ट्रेडिशन के हैं, आपको किसी भी एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू के अंदर उसके बिहाफ पे ये नहीं बोला जाएगा कि आप यहाँ काम करते हैं तो आप ये, अगर आप सरदार हैं और हमारी कंपनी ब्राह्मण्स की है तो आप पगड़ी उतार के आइए, आपको नहीं बोला जाएगा। आपके ट्रेडिशन को भी उतना ही अच्छे से एंजॉय किया जाएगा। अगर आप दिवाली मनाते हैं तो क्रिसमस भी उसी फेस्टिविटी, उसी शिद्दत के साथ उस ऑफिस में मनाया जाए। तो इस तरीके का माहौल बनाने की जो बात है वो आर्टिकल 43 के अंदर करते हैं। आर्टिकल 43 क्लोज ए, ये एक नया जोड़ा गया, आर्टिकल 43 ए। अगेन दिस इज आल्सो एडेड बाय इंदिरा गांधी जी by 42nd Amendment Act 1976. It says that the government responsibility is this also to secure the participation of workers in the management of industries। यानी वो केवल काम नहीं करेंगे, वो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर भी हैं। जब हम बात करते हैं वर्कर्स की, तो वर्कर्स को अगर आप इकोनॉमी इंडस्ट्री की, अगर आप इकोनॉमी सोसाइटी की, अगर आप इकोनॉमी कंट्री की बढ़ाना चाहते हैं तो वर्कर को वर्कर मत मानिए, वर्कर को पूरी अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो वर्कर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर